हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करूंगा। मैं जनरल ओवरव्यू हम एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी को मैंने बताया है आपको टाइम टू टाइम। एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, बायोलॉजी की और कल्चरल एस्पेक्ट्स की एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए इसकी ब्रांचेस को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ब्रांचेस के नाम क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो हैं, उनके नाम हैं बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लुक एट मी। देन उसके बाद लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आता है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है। तो ये अपने अपने फील्ड में अपने काम करते हैं। और इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम भी आते हैं जो कि डिफरेंट, आप देखोगे कि कैसे वो डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडीज को एनालाइज करते हैं, है ना। बायोकल्चरल जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, हम सोशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं हम, मैरिज, फैमिली, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ना। तो ये सोशल स्ट्रक्चर की बात करें कि आप जैसे देखिए कि सोशल स्ट्रक्चर जैसे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर, हमें इस तरह का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है, इस तरह का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं नॉर्म्स, है ना, रूल्स, रेगुलेशंस, यस रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एंथ्रोपोलॉजी को इसमें एप्लीकेशंस इसमें लगाना पड़ता है। और हम सोशल स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब मैरिज की बात कर लीजिए तो मैरिज की डेफिनेशन कैथरीन वो ने दी थी। उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने दी थी मैरिज की डेफिनेशन। उसके बाद आप देखोगे कि जीबी मर्डॉक ने वही सोसाइटीज की स्टडी की थी। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज की स्टडी करते हैं और सोसाइटीज की स्टडी के साथ साथ जस्ट रिलैक्स, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर यू आर सेइंग। तो सोसाइटी की वो स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि फैमिली जो है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस है। अब हर सोसाइटी में वन और द अदर फॉर्म्स आपको फैमिली की यू विल सी, but society as a whole have different forms of families. अब families की types होती हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। अब फैमिली पैट्रीलोकल फैमिलीज होती हैं, मैट्रीलोकल फैमिलीज होती हैं, पैट्रीलिनियल फैमिलीज हैं, मैट्रीलिनियल फैमिलीज हैं। मैट्रीलिनियल फैमिलीज में आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस इन द नेम, इन द लाइन ऑफ मदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रीलिनियल फैमिली। कॉन्सैंग्विनियन फैमिली, एफिनल फैमिली। अब कॉन्सैंग्विनियन फैमिली वो फैमिली होती है जिस फैमिली में ईगो का बर्थ होता है। और जिस फैमिली में और वो फैमिली दैट इज फॉर्म्ड व्हेन ईगो मैरिज, और फैमिली फॉर्म्ड आफ्टर द मैरिज ऑफ ईगो इज कॉल्ड एफिनल फैमिली। तो ये भी टाइप्स है फैमिली की। ओके, तो जॉइंट फैमिलीज में डिफरेंट जनरेशन्स के लोग रहते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में कौन सिर्फ दो ही जनरेशन्स के आपको लोग मिलेंगे। तो ये डिफरेंट जो फैमिलीज हैं, डिफरेंट जो चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको इनको अंडरस्टैंड, मैं आपको बताने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल जेस्चर, yes you boy, you smart boy, long chap, look at me what I am saying. So you are here to get knowledge from me, so do the job for which you are coming over here.
I am excited to discuss with you the different forms of you have marriages also. There are different types of marriage. You have a monogamous marriage, then you monogamous marriage is that type of marriage in which person one male and one female marries together. That is called monogamous marriage. Then second is polygamous marriage. Polygamous marriage, you see that in which there are multiple males and females that marry with each other. Okay, so um, monogamous marriage means we have polygamous marriage. You have different types of marriage, that is poly hetero, that is you can say polygamous marriage you can say. Then you have polygyny marriages and polyandry marriages. Polyandry marriages, or you can say polygyny marriage. Polygyny marriages, one is that type of marriage in which one man marries multiple women. Okay, and in polyandrous marriage is that type of marriage. It is a type of marriage uh, in which I am discussing with you poly we have discussed with you polygynous and polyandrous marriage. So, polyandrous marriage is that type of marriage in which what happens? What happens? I am forgetting why I am forgetting. I think I am not focusing on my thought process. I should focus on my thought process. In so poly genus interest marriage is that type of marriage in which one woman marries multiple men. Okay, so such type, there are many societies in which we see such type of marriages. Just focus. So, what I was discussing with you is that polygynous marriage, polygamous marriage, you can say you see Nayars. Nayars is that type of family in which we see polyandrous marriage. And okay, and you can say in Khasas, in Garos, we see polygyny marriages. Okay, so it all depends upon the social structure, the social institutions, okay, the cultures of such people, that the rituals that they are participating in, and the various things that they are used to go through. So I was discussing with you the different formats of things. I am just in a relaxing mood. Just focus on what I am thinking with you. That just listen to it. Okay. So what happens is in such times of marriage, you can say you see a different men and women plays a different roles in it. Okay, so I am you are they have different types of religious belief. People practice different types of rituals. They perform different types of worships. Okay, so there are many forms of religions in the societies. Animism, animatism, fetishism, naturalism, totemism is the various forms of religious belief. So there are various medico practitioners
there are various religious macro. This is this religious practitioners and medico practitioners. So, like I would say that sorcerer. Sorcerer is that type of a person who has some magical powers, and that magical power is used to harm others. So witchcraft is also a type of magic that is performed in order to harm other people. So priest is the person that performs ritual activities, worship, he do perform very rituals on the behalf of his clients. Okay, so you saw religious belief, religious. Then I was talking with you. Priests and shamans are there. Okay, then the sorcerer, witchcraft are there. Then medicine man do the job of healing, and she such person gives medicines to the sufferer, and make use of natural medicine so as to relieve them from diseases. Okay, so I was discussing with you the various forms of religious belief. No, let us now discuss about the political life. So, what is the political life? Political life is defined as the system, the polity, the prevailing, the nature of political system that is prevailing in the system. We have centralized political system, we have the type of leadership, the governance. Okay, then the administration system, how do they deliver law and justice. We are discussing whether there are written laws. We talk about laws. We talk about justice delivery system in political in this you can say political system. Okay, so political system, we have different forms of political organizations, like we have band, tribe, chiefdom. I have made you clear regarding the various forms of political organization. So political organization. So we see that the villages there is, we see the emergence of the villages. The people living over there, they were self-sufficient. They practiced the people lead a nomadic life. They lead nomadic life. Then they Okay, so then also they were self-sufficient in producing the food grains, and what they do, they people engaged in different types of exchanges. Okay, we have reciprocity. People reciprocate. People also boat latches organization were done to give some to show their prestige and their richness. Okay, so that was the main aim of these. We are studying the political system. Okay, so yeah, people, there are various types of reciprocity. People reciprocate, people return, give something to others. They have balanced reciprocity, there are negative reciprocity. You have to listen, you have to focus on some sentences, you have to prepare so that you can be able to deliver you can be able to execute your task. So we have been very much, you can say, the people that are just discussing of these things. Okay, so I was discussing with you the lot of things that I need to discuss with you. So what I need to say is that
there are various types of political organizations that I have discussed with you. So there are various types of economic system that are prevailing in the primitive societies in the period of savagery. Then there was shift in the economic system during the period of barbarism and in the period of when civilization emerged. So people used to engage in different activities. They have different economic activities. They have different religious practices that were undertaken. So I want to discuss with you the various things of it that I know that you must understand to it. I that I will make this subject very easy to you so that you can be able to study and get excellent marks in the anthropology. So I was my aim was to prepare some 10 or 50 pages that you just every day you just read and write, so that you have ready templates with you so that we can produce such templates in the examinations. Hmm. I am here to I'll make the discussion on the topics of the anthropology that I was discussing. You know James, Franz Boas is the father of American anthropology, and H.C. Roy is the father of Indian anthropology. Various anthropologists, D.N. Mazumdar had studied the Himalayan tribes and Central Indian tribes. So G.S. Gure said that it is the say that basically tribals are the backbone god Hindus, and tribals are needed to integrate with the main society. So you should frame sentences. Don't worry, you are speaking wrong, but one day will come when you will speak in a very efficient and progressive manner, and you will have been no doubt. Yes, but what are your questions? Let me discuss on this. Okay, so you want to ask me what is a religion? Okay, I'll tell you what is a religion. So religion is some kind of belief that the people used to have. Mm. So there are various forms of religion. So animism. So you believe in the soul, that is called animism, and believe in the supernatural forces, that is called animatism, and believe in the believe that there is impersonal power in every you can say decorated object. Okay, so Durkheim in his book Elementary Forms of Religious Life, he opined that the given the concept of sacred and profane, like LP Vidyarthi, he studied the sacred complex of Bodh Gaya, and he made it clear that it has been divided into various components. We have social structure, we have something called sacred and something called mundane. Is a normal thing, it is a mundane activity. Okay, sacred is something that is to be taken care of, like such as performing meditation, then performing a great task, performing great ideas and thoughts. Okay, doing meditation, doing puja. Okay, doing ucharan karna mantra ka, that is something called sacred. So there are sacred specialists in sacred complex of both Gaya. There are sacred they are called sacred performance. Then there is a sacred geography. It is the place, that is separated, and that is something called sacred. Okay, it constitutes temples. It also constitutes a place where people come and worship and do meditation, puja. Okay, and all other things. And the
एक सैक्रेड के बाहर एक सर्कल, एक, अगर ये सैक्रेड है तो सैक्रेड के बाहर का जो रीजन है ना, जो एक्टिविटीज है इसके बाहर की, है ना, जो अगर मुंडेन एक्टिविटीज है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोफेन. So my aim is to make you understand in a very simple and lucid manner. Okay, so there are various anthropological thoughts that I want to discuss with you. You have heard about classical evolutionism theory. Classical evolutionism theory believes that there is a psychic unity of man. Every culture has to pass through the various stages and of evolution. Okay, like James Fraser, like L.H. Morgan, okay, E.B. Tyler, they belong to classical. They belong to classical evolutionism. Then historical particularism was given by Franz Boas, who is called the father of American anthropology. So he focused on that culture. We are going to study culture. If whenever researcher wanted to study culture, so the culture should be, there has to be cultural relativism in his study of culture. Cultural relativism, I mean to say that there is not any you can say superior or inferior culture. All cultures are equal. So if cultural relativism says that if you want to study any culture, you have to understand the culture in his own perspective. You have to make use of ethnic and ethic approach in studying the culture. So that Franz Boas says that culture is not, no culture is inferior or superior. Every culture is unique and must be understood in its own perspective. Diffusionism anthropologists that they belong to American, German, and British schools of thoughts. So, diffusion school of thoughts, we see German anthropologists, then British anthropologists, then you see American anthropologists. So, people of diffusionism say that culture people do not think alike. There is not any such scientific unity of man. So people in normally are not creative. Culture, people want to imitate others, wants to follow others. So diffusionism says that the people, the culture originated like British anthropologists said that Egypt was the place from where culture originated, and from Egypt the culture got diffused into the various parts of the world. So, American anthropologists talked about the culture centers, the culture areas where the culture originated, and from the place of origination, the culture got diffused into different places. So, German anthropologists said that it negated the British school of diffusionism. Okay, so what this German school of diffusionism said that culture not only originated in Egypt, culture originated at different parts, different societies of the world, and from those specific locations, culture got spread or got diffused into the other parts of the world. So it says that Egypt is not only the culture cradle of civilization.
So I wanted to make you clear thoughts that anthropological theories are the foundation on which the entire theories are the foundation or the base on which the entire subject is based. Anthropological theories are the you can say are the foundations. They had laid the foundation, and on which the entire concepts, entire anthropology is dependent upon. I would name few anthropologists like Levi-Strauss and E.B. And Levi-Strauss and Edmund Leach, who belonged to structural school of thoughts. Levi-Strauss and Edmund Leach belong to structuralism. Now, what is structuralism? Structuralism means that our mind had a structure. So, we structure thoughts in our mind, and this structure of the mind is responsible for the formation of culture. You have symbolic and interpretative theory of anthropology. So Snyder, Clifford Gage belonged to symbolic and interpretative theory of anthropology. We must understand the symbols. You must read the books, only then you will be able to explain to the students. So the more you learn, the more you forget. You have to read more and more, and with the help of this you will be able to get what you will get content. So content building can be done by doing the job of reading and reading. That is, reading provides you content. So I was discussing with you people understanding the culture. We need to understand the symbols of the culture, the activities of the culture, the rituals, the customs, the traditions, and we use approach, that is interpretative approach, to discuss the various cultural theories, cultural thoughts. We have to make understand how this symbolic and interpretative theory gives the idea that we need to understand the symbols, and through the understanding of the symbols we will be able to understand the culture. Similarly, we have cultural materialism. So, cultural materialism wanted focused on the materialistic aspects of the culture, such as, for example, owning car, owning jewelry. These are the owning house. These are the materialistic things. Marvin Harris opined that these material things should be our area of focus, and understanding these material aspects gives us the understanding of the culture, that is called cultural materialism. So he gave the example of cow, sacred cow.
It has, as according to Marvin Harris, it has economic benefits as well. It provides milk, cow dung. Okay, so that is why cow is sacred. Totemism means it can be any plants or animals, and that is sacred. People who have a totem, they don't kill him, they don't harm it. There are various principles governing producing means doing food, doing hunting, collecting the food items. Pastoralism means domestication of animals. Horticulture means doing agricultural activities with usage of simple tools and techniques. So these you must need to understand. You must focus on the future framing of the sentences, but not much focus should be on what if you have spelled wrong sentences. So that is called food production. Then big man, village head is the elder member of the society is appointed as the village headman or headman. A such headman solves the various problems, domestic problems, any issues they are having, that is taken care of by the village headman. I am here to, I know, I am speaking the sentences in a fluent manner, in a fearless manner. You all girls, are you understanding me? What am I saying? Yes, backbenchers come in the front. There are some empty desks. So, what I mean to say is that focus more on the case studies. Researchers, there are many books that are written by the anthropologists, the Muria and the Gotul, the Baiga, Gons, Orwans, Ho, Hindu methods of tribal absorption by N.K. Bose, religion and society among the cooks of South India, studied by M.N. Srinivasan. M.N. Srinivasan introduced, studied Sanskritization, Westernization. There are various exogenous and internal as well as
endogenous, exogenous process of socio-cultural change. Cultural assimilation is taking place. Cultural adaptation is taking place. There is a modification in the culture. People are being exposed to urbanization, migration, westernization, people living in the lower strata of the social hierarchy wanted to improve their social status and wanted to rise high in the hierarchy. So lower strata people, what they do, lower strata people imitates the belief, the culture, the customs, traditions, activities, even celebrating the festivals of the higher caste people. So, Sanskritization is taking place that is going to enhance your aspects of knowledge. I want to explain with you the various things, the ideas that I am here discussing with you. There are various definitions given by Westermark, G.B. Murdoch. Radcliffe Brown belongs to structural functionalism school of thought. Malinowski belongs to functional school of thoughts. Anthropologists have given different concepts. Anthropologists have been rightly called social doctors and social engineers because they live with the people and they do participant observation and document the culture and write monograph, ethnograph of a particular culture. So things are that we want to discuss of it or not of it. I want to hear speak up loudly and clearly. Focus on your thoughts or expressions that are there required to do so. You have to be an orator. You have to do reading lot everyday basis पे आपको रीडिंग करनी होगी, then you will be able to master these anthropology subjects. Demographic profile, I was discussing with you the social capillarity theory. Social capillarity theory, I just want to say that अब देखिए अब ट्रीज को वाटर चाहिए और वाटर रूट से फ्लो करता है अपवर्ड थ्रू कैपिलरीज. ओके, अब जब कैपिलरी वर्ड यहां से लिया गया है और कैपिलरी वर्ड को जब हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, देन हम इसको बोलते हैं सोशल कैपिलरिटी. सोशल कैपिलरिटी सेज दैट जब हम हायर सिविलाइज्ड सोसाइटी में होते हैं तो
जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हमारा स्टेटस जो है वो बढ़ता है, सोशल स्टेटस हमारा बढ़ता है, उससे फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं सिंपल वे में, मैं आपको बताऊं डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जेंडर, मेल फीमेल, पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ, क्या फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन के ग्रो करने में, वो इसमें इसके अलावा और भी बड़ी टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। तो हमने थ्योरी देखी सोशल कैपिलरिटी थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, तो आप देखोगे कि हम इसमें बर्थ रेट स्टडी करते हैं, डेथ रेट स्टडी करते हैं, ओके, मोर्टेलिटी स्टडी करते हैं, नैटेलिटी स्टडी करते हैं, फर्टिलिटी देखते हैं, फर्टिलिटी कहाँ पे है, किस सेक्शंस में फैमिलीज गिव बच्चे, ग्रोथ रेट ज्यादा है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, किस रीजन में बर्थ रेट कम है, तो उसके क्या रीजंस है वो मैं बताऊंगा। लिटरेसी रेट इम्पैक्ट करता है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप कम बच्चे पैदा करेंगे, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप ज्यादा बच्चों को पैदा करेंगे। रिलीजन का व्यू पॉइंट क्या कहता है, इसको लेके रिलीजन का कहना ये है, अब कुछ रिलीजन कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करना चाहिए। अब रिलीजन, इस्लाम रिलीजन ये कहता है तो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। वैसे ही अगर मैरिजेस किस एज में हो रही है वो भी एक फैक्टर है, लेट मैरिजेस हैं तो बर्थ रेट स्लो होगा, लो होगा, ओके। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो आप देखोगे कि वहां पे बर्थ रेट कम होता है। अगर जेंडर इक्वलिटी है, अगर विमन एजुकेटेड है और एम्प्लॉयड है तो आप ये जनरली आप ये नोटिस करोगे कि बर्थ रेट लो होता है। हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को पढ़े हम, अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस हाई है, प्रोटीन रिच डाइट है, तो आप नोटिस करोगे कि फर्टिलिटी वहां पे कम होगी। और अगर अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर लो है, हाई है, न्यूट्रिशनल डाइट कंज्यूम करते हैं लोग या कम न्यूट्रिशनल डाइट कंज्यूम करते हैं तो वहां पे फर्टिलिटी आपको हाई दिखती है। तो मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना, डिस्कस कराना, आपके सामने मैं आइडियाज को रखता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। सामने कोई भी बैठा हो, है ना, हाइट कोई सुंदर व्यक्ति बैठा हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर नहीं करना चाहिए। आप किसी भी डेजिग्नेशन का बच्चा बैठा हो, बड़ा, इवन आपको
जो बड़े इवन सेलिब्रिटीज तक क्यों ना बैठे हों, या फिर पॉलिटिशियंस तक क्यों ना बैठे हों, या फिर ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना बैठे हों, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर नहीं करना चाहिए। आपने अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको आपको कंट्रोल रखना होगा और ऑब्जर्वेशन आपको करनी होगी अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो गाइस, एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम जब बीमारियों की बात करते हैं तो बड़े सारे जो है और क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सुपर फीमेल है, इंटरसेक्स है। तो ये जो सारे मैंने ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज जो आपको बताई हैं, ये क्या है? ये ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज है। अब क्लीन फिल्टर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ये जब क्रोमोसोम नंबर 21 आपका ट्राइसोमी है और क्रोमोसोम नंबर आपका जो 18 है वो ट्राइसोमी है। जब क्रोमोसोम नंबर 13 क्रोमोसोम नंबर अगर 13 ट्राइसोमी में है, तीन क्रोमोसोम 3x है, दो एक्स की जगह, दो क्रोमोसोम की जगह तीन क्रोमोसोम है। पेयर्स में होते हैं ना क्रोमोसोम, कितने पेयर्स होते हैं? ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं, तो 46 नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के एक सेल में। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 21 में पेयर ना हो और क्या हो, ट्राइसोमी हो, ट्राइसोमी हो मीन्स तीन क्रोमोसोम्स हो, एक्स ट्रिपल एक्स 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 एक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज हम कहते हैं। इसी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की बात कर रहे थे हम। ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज है इसमें, और एक आता है सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो है पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्री टू चैट सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम की बात करें, यहाँ पे आपको एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स आपको एक्सेस में मिलेगा। एडवर्ड सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम आपको नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा एक्स क्रोमोसोम। पटाओ सिंड्रोम में भी ऐसा ही है। और क्री टू चैट सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, वो उसका कुछ हिस्सा मिसिंग होता है। तो इसमें आप देखोगे फिजिकली बॉडी में चेंजेस होती है, टॉल होती है हाइट, या शॉर्ट होती है, वेब्ड नेक होता है, या डेवलपमेंट जो होता है वो जेनिटल्स का वो प्रॉपर नहीं होता है। ओके, तो मेंटल रिटार्डेशन, we see mental retardation, we see no physical development, why? ठीक है, आपके टांगे जो है वो तकनी नहीं चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्रिक्वेंटली, कॉन्फिडेंटली फॉर 2 hours, just correct your posture and you will see a very large improvement in your on your tangas, on your legs. So I wish that I continue for 2 hours lectures so that I can guarantee you success. Then we have जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। इसमें होता ये है कि अब ऑफस्प्रिंग है, चाइल्ड है, तो उसके अंदर जीन्स, एक जीन्स पेरेंट से आता है मेल से, एक जीन फादर से आता है और एक जीन मदर से आता है। तो अब जीन फादर से आया या मदर से आया, उसके ऊपर
ये उसकी वजह से जीन ऑफ होगा, जो ऑन होगा, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। तो इसमें हम देखते हैं बड़े सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजलमैन सिंड्रोम, प्राइडर विली सिंड्रोम, ओके, बैक विथ वाइजमैन सिंड्रोम है। ओके, तो ये काजेस होते हैं, बीमार कर देते हैं इंसान को, एक डिफेक्ट आ जाता है, फिजिकल डिफेक्ट आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है इससे। तो इनको स्टडी करने के लिए साइंस क्या करती है, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। हम क्रोमोसोम्स की एनालिसिस करते हैं, जीन्स की एनालिसिस करते हैं। जीन बेसिकली है क्या, एक सेगमेंट है डीएनए का, इसमें हम एनालिसिस करते हैं और हम बताते हैं बीमारियों के बारे में। हम जो है पेशेंट को जानकारी देते हैं, जागरूक बनाते हैं। ओके, जागरूक हम बनाते हैं। कैसे, आपने थॉट प्रोसेस को कंसंट्रेट करके रखना है, डिस्टिंग्विश करके रखना है, आपको डरना नहीं है। यही तो दिक्कत है वहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया कि जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, तो क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, कार्योटाइप एनालिसिस किया जाता है, तो क्रोमोसोम्स की को स्ट्रक्चर के स्टडी किया जाता है, क्रोमोसोम्स के नंबरिंग को स्टडी किया जाता है। और हम क्या करते हैं, हम कपल्स को हम गाइड करते हैं कि उनको चाइल्ड प्लानिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। उनके लिए हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जेनेटिक काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से, हम जीन थेरेपी भी देते हैं। हम जो डिफेक्टेड जीन है उसको हम रिमूव करते हैं और उसको जो करेक्ट जीन से उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिया गया था, डिस्कवर किया गया था, डिस्कस किया गया था। इसने जीन मैपिंग करी, जीन स्क्रीनिंग करी, जीन्स को स्टडी किया। हमारी बॉडी के अंदर करीब करीब 20 से 25,000 जीन्स होते हैं जो एनकोड करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग की जाती है। हमारा आई का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, ये डिटरमाइन कौन करता है, जीन्स डिटरमाइन करते हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स रहते हैं, है ना, कॉकसॉइड है, निग्रॉइड है, मंगोलॉइड है। तो ई हुटन ने बताया कि ब्रॉडली 3 रेसेस पाई जाती हैं। अब इंडिया में बड़े सारे एथनिक एलिमेंट्स आप देखोगे इंडिया में मिलते हैं आपको, जैसे नेग्रिटो एलिमेंट है यहाँ पे इंडिया में, वो मिलता है आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मंगोलॉइड एलिमेंट है, वो आपको यहाँ पे मिलता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। आपको प्रोटो एस्ट्रोलाइड स्ट्रेन्स मिलते हैं सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में। आपको जो है इंडो आर्यन मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में। आपको स्काइतो द्राविडियन मिलते हैं, द्राविडियन मिलते हैं साउथ इंडिया में। इनकी हाइट कोई फेयर स्ट्रक्चर के होते हैं, फेयर कंप्लेक्शन होता है नॉर्थ इंडिया के लोगों का, और जो साउथ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके डार्क कंप्लेक्शन होता है ना। तो ये एयर कंप्लेक्शन, डार्क कंप्लेक्शन को आप सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी के साथ इसको हम रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि एज सच कोई रेस प्योर या इम्प्योर नहीं होती है। आप देखोगे अब ये कलर का कारण क्या है, ये हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की ह्यूमन अडेप्टेशन की वजह से होता है। जो लोग होटल रीजन में रहते हैं, वो उनको मेलेनिन की ज्यादा नीड होती है, क्योंकि सन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करना होता है, इसलिए मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनकी स्किन में। और क्या होता है, अडेप्टिबिलिटी को कही जाती है, इसको हम अडेप्टिबिलिटी का नाम देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हमारी जो स्किन है डार्कर हो जाती है। और आप देखेंगे कोल्डर रीजन में हमारी बॉडी फेयर स्किन होती है, क्योंकि हीट रेडिएशंस को रिटेन करके रखना होता है और विटामिन डी की प्रोडक्शन करनी होती है, हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करना होता है। तो अब वहां पे देखोगे कि
वहाँ पे जो लोग होते हैं वो फेयर कंप्लेक्शंस के लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं। आपने कीवर्ड्स पे फोकस करना ही जरूरी है, लेकिन आपका पूरा फोकस जो है आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसी पे फोकस करके आप एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। एक एक आपको, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करके जब आप आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, तब आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग आपको करनी होगी, अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि वहां में बाद में आपसे वो चीजें नहीं हो पाएगी और ना ही उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपकी बस पॉलिशिंग की जाएगी, है ना, आपकी बस क्या किया जाएगा, पॉलिशिंग की जाएगी। तो ये था डिफरेंट एथनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज यहाँ इंडिया में बहुत सारी रहती हैं, रिलीजियस मिनोरिटीज इंडिया में रहती हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशंस में इनके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं एथनिक मिनोरिटीज के लिए, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के लिए। तो आप देखोगे कि इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, लो लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, और फर्टिलिटी रेट लो है। ओके, तो चाहे आप बात करें जैनिज्म, बुद्धिज्म की, इस्लाम की, क्रिश्चियन की, सिखिज्म की, तो आप इनमें सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी पुअर है ना, इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनकी कंपैरेटिवली लो है बाकी जो रिलीजन है। तो इनको के लिए डेवलपमेंटल मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट लेती है टाइम टू टाइम। अब जैसे ट्राइबल्स के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स है, वहाँ पे उनके बच्चे वहाँ पे जाके एजुकेशन अटेन करते हैं। अब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ट्राइबल्स के लोग, रिहैब उनकी डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। जब कोई वहां पे डैम बनता है, ट्राइबल एरियाज में जब कोई डैम बनता है, या ट्राइबल एरियाज में कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, तो ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। और उसके बाद उनको अब चैलेंजेस क्या फेस करना होता है, उनको फॉरेस्ट से उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, उनको उनका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो टोटली शैटर्ड हो जाता है। उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ के साथ वो जी सके। आपके सेंटेंसेस ओरिजिनल होने चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो खुद से बढ़ाओ कॉन्फिडेंस लेवल, आप कोशिश करो, आप रखो। मैं आज अगर मेरा सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सेंटेंस फ्रेमिंग एक टाइम के बाद मैं कॉन्फिडेंटली सेंटेंसेस को फ्रेम करूंगा, और 2 घंटे 3 घंटे तक मैं लेक्चर्स देने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। लेक्चर देने के लिए मैं कैलिबर मेरे में आ जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, खेलना है, कॉन्टिन्यूस इंटरेक्ट करना है, पता करना है। ओके, तो आप देखोगे इन चीजों को आप समझोगे, ठीक है। तो आप देखना है कि अब सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए, थ्योरीज की बात करी जाए, हमने देखा कि डिफरेंट जो है फाइलोजेनेटिक स्टेटस, अगर हम देखें, अगर हम क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स देखें, मैमल्स होते हैं ये, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और ये इनका जो विजन होता है वो स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है इनका, इनकी इनके ब्रेन इनका स्मॉलर होता है, और ये इनकी ब्रांचाइजेशन, इनकी लोकोमोशन होती है, अर्बोरियल होती है, ठीक है। ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं, या फिर ग्राउंड के ऊपर ये रहते हैं। ये इनकी टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, इनकी जो क्वाटरनरी या फिर अर्बोरियल अडेप्टेशन है इनकी। आप देखोगे कि डिफरेंट अडेप्टेशन में से रहते हैं, और ये
इनका कल्चर, ये सोशली अपने आप को सोशलाइजेशन जो करते हैं, और चिल्ड्रन की प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी होती है मदर के ऊपर। आप देखोगे कि 1 घंटा होने वाला है, आपके दिमाग के अंदर ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप स्पीकअप करिए, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करिए। तो प्राइमेट्स जो हैं वो आए जब इंडिया में, जब वर्ल्ड में उनका इमर्जेंस हुआ, तो बड़े सारे प्राइमेट्स आए। ये हमारे एंसेस्टर्स थे, लेमूर्स, टॉर्शियर्स, लॉर्शियर्स। इनमें स्मेल की रिडक्शन होती है, इनमें स्मेल की रिडक्शन होती है, विजन इनका स्टीरियोस्कोपिक होता है। इनका जो है 5 इनकी फिंगर्स होते हैं, पेंटा डेक्टाइल्स होते हैं ये सारे। ओके गाइस, तो ये प्राइमेट्स जो है वो रहते कहाँ कहाँ है वो भी मैंने बताया। आपका पोस्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2 घंटे तक आप क्लियरली बोलते रहे, एक्सप्रेस करते रहे, स्टडीज को देखते रहे। तो गाइस, आपने जब बोलना है तो कॉन्फिडेंटली बोलना है, स्पीक अप करना है तो कॉन्फिडेंटली करना है, डरना नहीं है। हेलो गाइस, लेडीज एंड gentlemen, I am here to discuss. I discussed with you the various general anthropological discussion I have made with you. Okay guys, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सेस करिए मेरे 400+ वीडियोस का, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने यूट्यूब बड़ा वीडियोस बना के मैंने यूट्यूब चैनल में मैंने डाली हुई है। उन वीडियोस को रेफर करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ओके गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक रहेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। बाय गाइस, टेक केयर।